Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hello friends, today we discuss about a very important concept of education that is also base of education we consider. So that is the philosophical foundation of education and the topic is meaning and nature of education. That is the basic concept of education, meaning and nature. So let's start about these concepts. What is education? There are different subjects we already taught in our school and college life. But these subjects, we consider these subjects are the pure subject. ଯେମିତିକି ଆମେ ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢିଛନ୍ତି, ଫିଜିକ୍ସ ଆମେ ଏଠି ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ପଢିବା, ବୋଥ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଠି ଆମେ. So here in our school and college career we already taught the subject like physics, chemistry, math, okay, math, bio, history, geography, political science, economics, sociology, philosophy, psychology. Okay, so a lot of subjects are related to science, humanities subject, commerce, etc. Okay, but if someone asks what is the meaning and the concept of physics, you can define a proper definition about the concept of physics. Similarly, all the subjects here we discussed all have a definite definition. But education, that is not a pure subject. That is a combination of different subjects. Like in your B.Ed course, which subject you teach? You learn philosophy, sociology, psychology, ICT, then inclusive education, environmental education, population education, gender education. So these subjects are come together and become the concept of education. So here there was no proper and definite definition related to education. Okay, and peculiarly we generally consider till now no one can penetrate the ocean like education. So এই সেন্সরে গোটে ভাল কথাଟେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, they provide their own point of view about education, and these points or these viewpoints are become definition of education according to these individuals. So till now there was no appropriate or definite definition of education. So let's start. What is the education? How we understand the concept of education? What is the basis of education? Why education is necessary for the individuals? Okay, let's start. Education is the most important and powerful instrument to save and desirably mold human beings. Education गोटे एमिति इंपोर्टेंट आउ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जी की कौन करे ना गोटे इंडिविजुअल को एप्रोप्रिएट शेप प्रोवाइड करे, जो शेप रे पिलाटी विभिन्न जगह रे सी निजु को प्रूव करि परिबो. ओके, एंड आल्सो डिजायरेबली मोल्ड. ओके, ह्यूमन बीइंग जो आमे देखुचंती मो चारि पाखरे जो विभिन्न प्रकार रो ह्यूमन बीइंग को आमे देखुचंती, आमे निजे भी वी आर आइडेंटिफाइड बाय द हेल्प ऑफ आवर बिहेवियर. जी जेमिति बिहेवियर जहार जेमिति रहिबो से अनुसार ताकू अन्य लोक माने सब जानिबे बा चिन्हबे. दैट पर्टिकुलर बिहेवियर वी लर्न. Behaviors we learn. Okay, remember the concept of behavior, that is a learned concept. Human being learn the concept of behavior in different situations. Okay, ये जो बिहेवियर को हमें सीखुचंती, बुझुचंती, जानुचंती, that is possible due to the proper education. So education is the root cause of any change and which takes place in social, the changes
को जगह चेंजेस आसीबो सोसाइटी रे विभिन्न प्रकार चेंजेस को हम बुझुचंती जानुचंती सिमिलरली हमर कल्चर देन स्पिरिचुअल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये सब जगह विभिन्न जगह जो सब चेंजेस आसुची ये सब चेंजेस को हम बुझीबा एक्सेप्ट करिबा केमिति करिबा ना बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन सो एजुकेशन प्रोवाइड ए स्कोप टू द इंडिविजुअल टू एडजस्ट और टू adopt it in different changing process. Okay, so come to the next point, next part, that is it also help him to lead his personal as well as social life successfully. Through education we can maintain our personal and social life in a proper manner. Those who are educated individuals, they can easily maintain their both personal as well as their social life in a happiest manner. Okay, so another aspect, another concept, that is adjustment. Only the educated persons are adjusted in different situations smoothly. Okay, so adjusting to his surrounding, we may say that education is the means which helps an individual to adjust to the varying environment. In different environment रे हमको जो adjustment हमर होची, that is due to education. If there is no concept of education, we cannot adjust in different situations to fulfill his necessities and objectives of life. To fulfill his necessities and objectives of life. हम लाइफ रे जो सब necessities अछि, objectives अछि, ताको हम fulfill करूचंती विभिन्न टाइम रे जाई की, और से सब objectives और हम necessities गुडा को fulfill करिवार हमको हेल्प के करूची ना proper education. Thus education is a necessity of human life like food, clothes and shelter. Food, clothes and shelter, as we know, these three things are the basic needs of human life, human beings. So but in present context we found similarly education is become another important necessity or the basic need of human life, because without education we cannot adjust, without education we cannot shape our proper behavior, without adjustment we cannot fulfill our necessities, our objectives. So due to that, here we consider at last education is the another basic needs of human life like food, clothes and shelter. Okay, understand? Then come to the next point, next part, that is meaning of education. So here in this part we discuss the widely meaning of education in different context. जेमिति कि आमे एंशिएंट पीरियड रु केमिति एजुकेशन रो वर्ड आसी, इंग्लिश वर्ड एजुकेशन जो आसी, सी वर्ड टा कोन आसला, कोन आसला, इटिमोलॉजिकली आमे ताकू देखिबा, त वर्डली मीनिंग को आमे बुझिबा. ओके, एंड आल्सो वी कम टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे आमे एजुकेशन को को वर्ड रे आमे ताकू डिफाइन करंती आ तार मीनिंग कोन, ई सब जिंस को आमे बेठी डिस्कशन करिबा. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे तमे माने निश्चित भाव में ये सब पॉइंट गुडा को जो पॉइंट वर्तमान डिस्कशन करिवि, यू मस्ट राइट इन योर एग्जाम पेपर. सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज इन इंग्लिश education has been derived from the four Latin words, that is educare, educere, educatum and educo. Okay, different persons they think education derived from the different words. Let's start. The first word, that is educare. Educare. The term educare means to train or to mold or to raise or to nourish. Okay. ये सब जो वर्ड गुडा हमें देखुचंती, ये वर्ड सब एंशिएंट पीरियड रो वर्ड, एंशिएंट पीरियड रो आछि. तो एंशिएंट पीरियड रे जनरली एजुकेशन को कोन चिंता करा होतला, जे एजुकेशन रो कांसेप्ट कोन, एजुकेशन काहे दिया जिवो, to provide appropriate training to the individuals. Okay, so by the help of this training we can mold, we can raise the concept which are already present within the individuals, and to provide appropriate shape by appropriate nourishing. ये सब जिनस करिकी आमे कोन करिबा ना, गोटे पिला को गोटे इंडिविजुअल को तयारी करिबा. ये जो तयारी करिबा कांसेप्ट आसुची, से कांसेप्ट एजुकेयर रो कांसेप्ट बोली आमे एठी डिस्कशन करूछन. इन अदर वर्ड, इट मीन्स दैट the child decides to be brought up according to the certain ends and aims in view. Okay, that means every individuals have their own aims or have their own ends. So these ends and aims are defined and described by the help of education. So come to the next word, that is educere.
Educier means to lead out, the thing which are already present within the individuals, and through education we only lead out these things, or to draw out these things, or to bring forth within the what is within, जो जिनसटा हम भीतर अछि, the innate qualities and potentialities. Through education we only exert these things from the individual, okay, and to use these things for the mankind, okay. So in other word, it means to draw out the latent potentialities of the child. Then come to the next point, next word, that is educatum. Educatum denotes the act of teaching. As you know, education is a act of teaching, and that concept which is come from the word educatum, okay. Education, that is a performance, or teaching is a performance, okay. Not education, teaching is a performance. आमे केमिति पढ़ौचंती कोन करूचंती, that is called teaching. So that is, the teaching is an art, or teaching is a, we consider teaching is a performance. So এই जो कथाटाकू जो वर्ड रे आमे ताकू रखिले, जो मीनिंग को नै कि आमे रखिले, से वर्ड टाकू आमे कोन कहउचंती ना एजुकेटम बोली कहउचंती. It throws light on the principles and practice of teaching. तो ये जो एजुकेटम कॉन्सेप्ट रे से कोन कहउची ना, ये जो एजुकेटम बा एक्ट ऑफ टीचिंग कथा को होउची, इट थ्रो लाइट ऑन द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग. कारण आमे जत्ते भलो भाबरे पिला को पढाइबो, आमे जत्ते इनोवेटिव प्रोसेस रे आमे पिला को पढाइबो, पिलांकर डेवलपमेंट सेते भलो से हबो, बा तांकर से अनुसार बिहेवियर चेंजेस से अनुसार हबो. तो सेही कांसेप्ट रु एजुकेशन आसी बोली द वर्ड एजुकेटम डिफाइन्स, ओके. Then the last word, that is educo, and educo, that is comprising with two words, that is e and duco. E and duco. E stands for out of, and duco stands or means to draw out, okay. That means that is the similar meaning like educier जो meaning thila, same type ro meaning एठी हमें देखिबु educo रे. The thing which are present within us, we consider these are the inner power of man, and through education we only draw out these power or these qualities to outside, okay. That is the meaning of education according to the Latin word educare, educier, educatum, and educo. Clear to all? Then come to the next Indian context. Here the Greek word, before that, the Greek word pedagogy is also used, sometimes used for education. ए pedagogy wordटा प्राय समस्त किछि मात्रा रे सुनिथिबो, जे विभिन्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आगो तुमको आसीबो तुम पई विभिन्न टाइम रे, सेतिर गुड पेडागोजिकल कांसेप्ट, गुड पेडागोजी टॉपिक रुहे, एंड फ्रॉम दैट टॉपिक वी आल्सो फाउंड some sorts of questions related to general education and processes of education. So see, the word pedagogy, that is a Greek word, okay. And sometimes the word pedagogy is used for the process of education, okay. The most common in Indian context, the most common Indian word शिक्षा. Generally आम Indian context रे education को कौन कहू ना शिक्षा बोली कहू, शिक्षा, which is derived from the words from the Sanskrit verbal root, that is sas, okay. And the meaning of sas is to discipline, to control, to instruct, and to teach, okay. तो एठी सास जो कथाटा अछि, से सास रो मीनिंग को हम जतबे संस्कृत रो जतबे ताको भलो भाबरे हम ताको खुजिबा, सेतबे हम कोन पाउ ना सास रो मीनिंग कोन अछि ना टू डिसिप्लिन. दैट मीन्स थ्रू एजुकेशन वी क्रिएट सम disciplinary attitude among the individuals. Also, that is to control. Through education we can control the behavior, okay, the evil patterns which are already exist or present within the individuals. These things are controlled by the help of education. And also to instruct, because in our surrounding a lot of things are there which are doing by the individuals. तो ता भितर किछि थाए गुड थिंग्स अछि, किछि बैड थिंग्स अछि, किछि राइट अछि, किछि रॉन्ग अछि. सो आमे कोटा को अटेम्प्ट नबा, को कामटा को आमे कले हम लाइफ रे हम सक्सेसफुल होबा, को कामटा को कले हम लाइफ रे सोसाइटी हमको अडॉप्ट करिवो, ई सब कथा को के इंस्ट्रक्ट करे, को कामटा को हम करियार अछि, के इंस्ट्रक्ट करिवो ना एजुकेशन. And the last word, the last meaning, that is to teach.
आउ एजुकेशन माने शास्त्र आम कौन बुझुछथि ना आम पिला को पढ़ेबा काहा गुटे पढ़ेबा दैट मीन्स सम आर मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स आर देयर ओके एंड सम आर लेस नॉलेजेबल through teaching process we only the more knowledgeable individuals they should instruct they should control they should get they should provide some disciplinary concept to the less knowledgeable individuals that is also the meaning or concept of education according to the sas or sikha then come to the next word that is vidya किछि समय रे हमें विद्या को मध्य एजुकेशन प्रोसेस रे यूज करू which is derived from the sanskrit verbal word that is vid Bid word ru seta assi which means to know ame janiba okay the things which are present in our surroundings se सब जिंस को ame janiba because human nature that is always in researchable nature ame तो को researchable nature ame सब बेले किछि ना किछि जिंस को रिसर्च करिया कथा चिंता करू कारण we are very enthusiastic towards the knowing new things in our life so that is the concept of vidya. Vidya is thus the subject matter of knowledge which shows that disciplining the mind our mind को से discipline करिवो and imparting knowledge and after disciplining the mind कौन करिवो imparting knowledge को हमको impart करिवो where the foremost considerations in Indian context से जिंस को first कौन करिवो ना माइंड को डिसिप्लिन करिवो आ किछि नुवा जिंस को हम भीतर से इंपोर्ट करिवो that is the concept of education. Okay, and back in the 1500s the word education means the rise of children आमे जदि सेही समय बेले को जिबा एंशिएंट पीरियड को जदि बेले आमे जदि जिबा और डिस्कशन करिबा सेही समय एजुकेशन रो कांसेप्ट ता कोठु आसी जनरली जो ग्रीक एंशिएंट पीरियड रे ग्रीक सिविलाइजेशन दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट and also that is the developed civilization we consider so say civilization रे जो सेही जगह रे जो संभ्रांत श्रेणी रो जो लोक माने थिले अरिस्टोकेट्स सेही मानकर जो चिल्ड्रेन माने थिले तो गोटे से माने जते बेले समस्त काम करिया में बाहर जाउथिले तो सेही पिला मानकर केयर नबा कथा केही चिंता करू नथिले बा ठीक भाबरे केयर ताको निया जाई पर नथिला तो सेही सेंस रे से ग्रीक रे गोटे कॉन्सेप्ट आसिला गोटे डे केयर सेंटर भलिया गोटे कॉन्सेप्ट आसिला जोटे कि आज का डेट रे छोट छोट पिला को आमे नेकी छाडु छथि डे केयर सेंटर रे 3 प्लस बेल को आमे तक नेकी छाडी दउ छथि सिटी पिला माने पढा पढी करू छथि बा जो पढा पढी कोन सिटी खेला खेली करू छथि जेमिति कि हमर तर जो बड़ बड़ सिटी मान करे बहुत पेरेंट्स जतबेले से माने जॉब रे अछंती तो से मानकर पिला को प्रॉपर केयर जो जॉब पीरियड रे जो प्रॉपर केयर नबा पई से माने कोन करू छथि तां पिला मान को डे केयर सेंटर छाडु छथि सिमिलरली एंशिएंट ग्रीक रे सेम सिचुएशन सेम सिस्टम गुटे अडॉप्टेड हला सेते बेले से जो डे केयर सेंटर सब रहिला से डे केयर सेंटर रे कोन करा हला ना एई भलिया पिला मानकू तांका मां बाप माने सेठी छाडी तो we think the formal system of education started from that point but जदि आमे एमिति एजुकेशन कथा डिस्कशन करिवु कोनटू एजुकेशन आसिला द रूट ऑफ एजुकेशन आमे एठी देखि परिबा जेबेटू ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ civilization the concept of education come in light okay because जते बेले लोक बा गुटे इंडिविजुअल बा गुटे ह्यूमन बी किछि नुवा कथा करिया कथा चिंता कला नुवा कथा करिवो माने से सिखिबो किछि जिंस तो से जो नुवा कथा करिवो आ से सिखिबो से जो सिखिबा कथाटा एजुकेशन रो पार्ट तो आमे सेही समय रे आमे कोन देखु जे एजुकेशन स्टार्टेड फ्रॉम द ह्यूमन सिविलाइजेशन ओके जते बेले ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हला सेही थ्रू एजुकेशन स्टार्ट हेजि बोली आमे कहू but it also meant that training of animals sometimes जो एनिमल मान को जो ट्रेनिंग दिया जाए सही भलिया सेंस रे हम एजुकेशन को बेले बेले बुझिया कथा चिंता करू while there are probably a few teachers who feel like animal trainers तो माने भी समिति किछि टीचर को पाकर निहाती पढितो जो माने कि एजुकेशन को ट्रेनिंग हिसाब रे कंसीडर करत तो आज का डेट रे आज का कांसेप्ट रे इन प्रेजेंट सिनेरियो द कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज ऑलरेडी चेंज्ड हमें आगु गले से सब चेंजेस को हमें बुझिबा एजुकेशन दिस डेज हैज कम टू मीन आइदर टीचिंग or the process of acquiring knowledge in present scenario in present context the concept of education हमें केमिति बुझंती ना टीचिंग कोन गुटे ताकू सिखेबा बुझेबा त कोन गुटे तार भितरे डेवलपमेंट करिबा एंड आल्सो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज हमें आम भितरे नॉलेज को एक्वायर करिबा गेन करिबा
এই কনসেপ্ট को आम एजुकेशन हिसाब रे कंसीडर करती. So these are all about the Indian and the Western concept of education or the meaning of education, the literal meaning or wordly meaning. Okay. Then come to the concept of the narrower meaning of education. Here we found there are two types of meaning of education, that is narrower meaning and broader meaning, which we discuss later. But here now we discuss about the concept of narrower meaning of education. Narrow meaning जोटा को आम ओडिया रे कोन कहूना संकीर्ण जो मीनिंग टा कोन. ओके, संकीर्ण माने जो ओडिया रे जो लिटरल मीनिंग सेमिति नुह, एठी टिके डिफरेंट देखिबा कोन narrower meaning of education कोन. In its narrower sense, education means schooling. Here everything is systematic, prefixed and predetermined. तो जोठी आमे भाबिबू education which we get from only the formal institutions like school, colleges, universities, सेई सब जगह रे हूँ आमे एजुकेशन पाउचंती. एई जो एजुकेशन आमे पाउचंती सेई एजुकेशन टाकू जदि आमे बुझिबा सेइटा हबो कोन ना narrower sense of education, जोटा कि कोन everything is systematic, prefixed and predetermined. सब जिंस properly formally maintain हेकी रहउची सेउठु आमे एजुकेशन होउचंती. That is the narrower meaning of education. The curriculum, the method of teaching, examination, the teacher are prefixed and predetermined. Already ताकू आमे आगुरु सब तयारी करके रखि थाउ, आमे केवल adopt करू. It is a systematic process to achieve the definite goal of education through classroom instruction. A learner can get proper employment after getting a certificate from these institutions. Overall, we can say that formal education is the narrower view of education. जो कथाटा कि ऑलरेडी तुमको डिस्कशन में कहि सारली. फॉर्मल एजुकेशन जो कथाटा कहउछथि आमे गले डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन हम फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन को जिबा. तो तमे खाली जस्ट कहि दूची जो फॉर्मल एजुकेशन कथा को होउची, फॉर्मल दैट मींस सिस्टमैटिक. ओके, आमे हम एजुकेशन प्रोसेस रे जो सब सिस्टमैटिक मेंटेन करू कोन करू ना आमे जते बेले एजुकेशन सिस्टम को गुटे आसु कोन देखु फॉर्मल स्कूल सिस्टम रे ना गुटे स्कूल थिबो, सेतिरे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर थिबो, सेतिरे क्लासरूम थिबो, सेतिरे जो तमरो मटेरियल रिसोर्सेस थिबो, बेंच डेस्क विभिन्न प्रकार मटेरियल रिसोर्सेस थिबो, सेति ह्यूमन रिसोर्सेस थिबो, स्टूडेंट्स थिबे ह्यूमन रिसोर्सेस रे, टीचर थिबे, नॉन टीचिंग स्टाफ थिबे, हेडमास्टर थिबे, अदर पर्सन्स थिबे, हेल्पिंग पर्सन्स थिबे, एमन सब थिबे. तापरे सेति कोन होतबो ना रूटीन थिबो, प्रॉपर्ली टाइम टेबल मेंटेन होतबो एंड एग्जामिनेशन होतबो, सर्टिफिकेशन होतबो. ए सब जिंस को जदी प्रॉपर्ली ऑर्डरली मेंटेन करा जाय जो इंस्टीट्यूशन रे, से सब ऑर्गेनाइजेशन बा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमें फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहबा. आ जो एजुकेशन से माने दियंती हमें ताको फॉर्मल एजुकेशन बोली को. सिमिलरली जते बेले हमें नॉन फॉर्मल कथा आसीबा, नॉन फॉर्मल ए जगह रे नो सिस्टमैटिक, नो फॉर्मालिटी. ओके, नो फॉर्मालिटी, किसी भी फॉर्मालिटी से मेंटेन हुए नहीं. दैट मींस बट वी लर्न, we cannot here in this process of education, in this process we do not maintain any formality, but we learn like newspaper. Okay, newspaper ଗୋଟେ एग्जांपल ଆମେ नबा न्यूज़पेपर जोटा को हमें पढिले विभिन्न कथा जानु जदी सिखु जदी, किंतु न्यूज़पेपर को नै कि हमें को एग्जाम पेपर रे न्यूज़पेपर को लेखतिनी बा हमें धर जो सोशल मीडिया कथा कहबा बा इंटरनेट कथा कहबा, ई सब जिंस जो रहिला एठो हमें बहुत कथा देखु जदी सिखु जदी, किंतु हमें ताको प्रैक्टिकली यूज करू नाहंती बा ताको देले हमें सर्टिफिकेट पाउ नाहंती. जेमति मु धर जो कहिबे एमति आज सकाळू तमे बसछ, पापा 10 टा को ऑफिस जाउ जदी तो मु कहि दे गेले जे बाबूरे तू ने एटा को पढ, ए न्यूज़पेपर टा को पूरा कंप्लीट कर देथि, मु संध्याळ को आसला बेलकू आ आसले मु तते न्यूज़पेपर रो एग्जाम करिवि. एमिति केबे हुए नाही, बिकॉज़ दीज आर द नॉन फॉर्मल processes from which we learn different things. Okay, and the third one, that is informal. तो एई जगह रे सम फॉर्मालिटी हमें कहि पारू, सम फॉर्मालिटी जोटा कि हमें हमरो जो विभिन्न जो ओपोनेंट डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम अछि जोठु कि हमें प्रॉपर्ली फॉर्मालिटी मेंटेन हुए नाही. जेमति इग्नो कथा कहबा, इग्नो that is an opponent जो हम कहि परिबा जे डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर जोठी कि हम एडमिशन हेलु, जो माने मेनली जॉब होल्डर अछंती, जो मान को आउट के ताकर
एजुकेशन को एनहांस करिवार अछि से माने जे सेठी जॉइन कले तो सेठी जॉइन कला परे से माने गुटे केवल तांकर किछि जिंस को से मेंटेन करिवे तांकर किछि काउंसलिंग क्लास हो नॉट रेगुलर क्लास दीज क्लासेस आर कॉल्ड काउंसलिंग क्लास तो से काउंसलिंग क्लास रे से माने किछि जॉइन करिवे आ बा डाउट क्लियरिंग क्लास रे किछि जॉइन करिवे तापर से माने एग्जामिनेशन देबे सर्टिफिकेशन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन एई दिरे जिंस को informal system of education में properly maintain करा जाए so here these three are the different forms of education that is formal non formal and informal okay got it these are the concept of narrower meaning of education then come to the next point that is broader meaning of education broad meaning of education तो ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन जोटा कि हमें जेमिति कि हमें डिस्कशन करले जे फॉर्मल मीनिंग बा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम टा नैरोयर को रिलेट कला सिमिलरली ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन को जते बेला हमें जिबा से काहा को रिलेट करिवो ना तमरो नॉन फॉर्मल को इट से रिलेट करिवो तो जोठी किछि फॉर्मालिटी नाही नो फॉर्मालिटी इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन ब्रॉडर सेंस एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम It is a lifelong process. It is modification of behavior and experience from the different means of source of education. That is a lifelong process. जो पॉइंट रे अंडरलाइन करूची से पॉइंट को टिके हम फोकस्ड होबा आ तमे पॉज करी कि भी ए सब नोट को भी लिखि कि तमे एग्जाम रे भी ए पॉइंट को लिखि परिबो It is the modification of the behavior and experience from the different means of the source of education. So here in our surrounding there are different sources, different आम कहि परिबा कोन जे पेरिफेरल एनवायरनमेंट आम सराउंडिंग रे अछि जे कि हमकु विभिन्न प्रकार एक्सपीरियंस कराय आ जो एक्सपीरियंस को हमें गेन करी कोन करू ना हम भितरे मॉडिफाई करू डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न को ओके सो दीस कांसेप्ट्स ऑफ एजुकेशन इज कम अंडर ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इट हेल्प्स वन टू कोप एंड एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट आ कोन करिवो ना ए जो ब्रॉडर सेंस रे जो एजुकेशन हमें नियंती नॉन फॉर्मली सी हमको आम विभिन्न प्रोसेस रे चेंजिंग एनवायरनमेंट रे हमको इजीली और क्विकली एडजस्टेड करेबो इट इक्विप्स ए प्राइवेट विथ डिफरेंट नॉलेज एक्सपीरियंसेस स्किल्स फॉर हिज ऑल राउंड डेवलपमेंट ओके आउ हमको आम भितरे थिबा जो विभिन्न एस्पेक्ट रो ऑल राउंड डेवलपमेंट करेबो थ्रू ब्रॉडर बा नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन In broader sense, life is education and education is life. हमें जदि life और education को दीटा जिंस को हमें जदि properly evaluate करिबा then we found life is education. Without education, there was no means of life. There was no values of life. Similarly, education is life because in the present scenario, in present context, everyone need education. Otherwise, we cannot adjust in different situations. We cannot cope in our environment or we face a lot of difficulties in our life so we must need proper education for our life so here life and education are very interrelated or interdependent concepts the experiences gained through the house temple church family playground club society school include the broader meaning of education so here all these are the generally all these are the except school all these are the non formal agencies okay non formal agencies of education ए जगह हम पाठ पढिले हमको सर्टिफिकेशन मिलेनी तुमको केबे देखिथिबो कि तुम फैमिली रू तुमको केबे कि सर्टिफिकेट दै जंती तुम क्लब जाउ तो गोटे क्लब रे कोन गोटे मिसिचो सेट कि तुम सर्टिफिकेट दैछि ना तुम सोसाइटी कोन गोटे सर्टिफिकेट दैछि रिटन सर्टिफिकेट नो बट स्कूल प्रोवाइड सर्टिफिकेट सो ऑल आर कम अंडर the broader sense the broader आबे कहि परिबा कोन ना these are the broader sources of education okay so these are the concept of broader meaning of education then come to the next point that is definition तो एई जगह रे मन रखो विभिन्न इंडिविजुअल कर विभिन्न डेफिनेशन सब अछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे यू मस्ट रिमेंबर सम डेफिनेशन आ जते बेला तुमको एग्जाम रे आसीबो मीनिंग एंड meaning of education you must write some definitions okay ଆଉ जो definition गुडा देछि सेटा सब कॉमन definition ताको के तमे चेंज करि लिखिबो नाही कारण ए definition गुडा भेरी कॉमन और समस्त definition गुडा जानते आ तमे जति किछि भी एपट सपोर्ट करि लेखो तो से माने ऑटो माने इजीली तुमको धरि देबे ठीक अछि
तो बुझिबा एंशिएंट इंडियन थिंकर मानकर डेफिनेशन कोन थिला जेमिति ऋग्वेद कहला एजुकेशन मीन सेल्फ रिलायंट एंड अदर्स एजुकेशन कोन करिवो ह्यूमन बीइंग को सेल्फ रिलायंट करिवो सेल्फ डिपेंडेंट करिवो ओके आमे अलग का ऊपर डिपेंडेंट होबानी दैट इज एजुकेशन ए कामटा हम भितरे करे एंड उपनिषदिक पॉइंट ऑफ व्यू द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एजुकेशन इज टू गेट साल्वेशन मोक्ष प्राप्ति हो ओके लिबरेशन साल्वेशन that means we are unified with the super soul already we all individuals have their own soul atma जोटा को हमें कहउछथि own soul okay through education हमें कोन होबो ना we unified मिसि जिबा with the super soul that is the concept of education according to the upanishad that is the end product of education शंकराचार्य according to शंकराचार्य education is the realization of self निजको निजे बुझिबा who am I what is my duty why we come to the world okay so everything about myself everything about related to myself that type of understanding is understand by the help of education okay so according to the Shankaracharya education is the realization of self the next one that is according to Kautilya education means training for the country and love for the nation जेहेतु कौटिल्य गोटे आम कहीपर जो नेशनलिस्ट थे जी कि इंडिया को भारत वर्ष गोटे एका पूरा माने एकाठी करिया कथा चिंता करथुले तो तांका सेंस रे एजुकेशन रो मीनिंग कोन थिला दैट इज ए सर्विस ओके दैट इज ए सर्विस टुवर्ड्स आवर सन कंट्री एंड लव फॉर द नेशन ताको प्रोसेस रे तांको वे रे से एजुकेशन को एमिति डिफाइन करले मु जेमिति आगु कहितली जे एवरी इंडिविजुअल दे प्रोवाइड देयर ओन डेफिनेशन about education according to their own point of view similarly तमे माने जतबेले कंप्लीट करिवो एटी B.Ed बा तमे माने जतबेले आउ किछि एजुकेशन बाबत रे रिसर्च करिवो then also you also provide your own definition on concept of education then modern thinker जदि आमे देखिबा सेमानकर एजुकेशन रे कोन ताकर कांसेप्ट थिला दयानंद एजुकेशन इज द मीन्स फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड राइटियस थिंग्स आम भीतर जो गुड कंडक्ट को हम मेंटेन करियो आ जोटा राइट जो जिंसटा हम पई ठीक सेही जिंसटा को करिवा को हमें एजुकेशन बोली कहंती अकॉर्डिंग टू दयानंद देन अरविंद एजुकेशन मींस हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल्स टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ जोटा कि हम भीतर अछि ग्रोइंग सोल आत्मा जो आत्माटा हम भीतर अछि से आत्माटा को हमें ग्रो करिवा गोटे पर्टिकुलर हमरो एम रहिबो से एम पर्यंत हमें से पर्टिकुलर हमरो आत्माटा को ग्रो करी न that is the concept of education according to Sri Aurobindo because Sri Aurobindo is a very spiritual individual so the spirituality the concept of spirituality must reflect on his definition okay then come to the next one that is according to Tagore education enables the mind to find out the ultimate truth which gives us wealth in inner light love gives significance to the life okay कौन करिवो माइंड को खोलिवो एजुकेशन कोन करिवो ना इट ओपन्स द माइंड हम माइंड को से ओपन करिवो ओके जो माइंड को ओपन कला से माइंड ओपन हला पर कोन होबो ना से ट्रुथ को बुझिवो द सेंस ऑफ ट्रुथ ओके द ओपन माइंड कैन रियलाइज द सेंस ऑफ ट्रुथ इट गिव्स द वेल्थ ऑफ इनर लाइट जोटा हम भीतर अछि अंतरात्मा रे जो हमरो एनलाइटमेंट रो जो कांसेप्ट अछि से कांसेप्ट को से बुझिवो love and give significance to the life proper direction the one life to education according to Tagore sorry according to Vivekananda education is the manifestation of divine perfection already existing in the man the thing which is already exist as a human being okay as a human being we have two quality that is animality like other animals we also animals human beings are also animals so as an animal we all have animality character at the same time only within the human being we found another quality that is humanity or we consider that is divinity quality animality character generally we know animals are strive for fulfilling their needs like food and some animals
shelter and sex. Okay, these are the basic needs. ଆଉ ଏଇ ଯଦି ଏଇ ସବୁ need fulfill ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର animality character ସେମାନେ satisfy କଲେ ତ ଆଉ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର problem ନାହିଁ. But human being, these species, okay, these species are very special because they have that type of quality, animality or divinity. तो आमे जो आमर जो विभिन्न प्रकार जो भगवान को कथा आमे सब पोथी पुराण जो पढ़ती आमे राम को कथा कहबा. राम तो राम देखिबा पई केमिति गोटे ह्यूमन बीइंग रो सेप दिया हिस आउ तांको पाखरे सब प्रकार भल गुण को आमे इंपोर्ट करछ. की इंपोर्ट करछ ना गोटे ह्यूमन बीइंग ही इंपोर्ट करछ. कांसेप्ट को आमे टिके इडी बुझिबा. द क्वालिटी ऑलरेडी विद इन द प्रेजेंट within the individual. Okay, तो सेही जो ह्यूमैनिटी कैरेक्टर जोटा आमे अलगा गॉड और गॉडेस को पई आमे जो डिफाइन करूछु से क्वालिटी ऑलरेडी आम पाखरे अछि. थ्रू एजुकेशन वी ओनली मैनिफेस्ट these divine qualities in a perfect manner already existing within the man. So that is the definition which is according to the Vivekananda. Then according to Gandhi, Mahatma Gandhi, by education I mean all round drawing out the best in the child and man, that is body, mind and spirit. So according to Gandhi, education helps to individual to develop the perfections, okay, in different aspect of human being, that is body, physically, mind, mentally and spiritually. এই তিনটা aspect রে ଆମେ ଆମର full sum ro development करिबा, ଆମେ ଆମର totality ro development करिबा. That is concept of education according to Mahatma Gandhi. Okay, clear to all? These are the Indian definitions. And now come to the Western definitions by Western concept of education. Western thinkers kon definition देखिबा. First, Plato. Education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. According to Plato, education realize the individual how to react, how to feel the pleasure and pain at the right moment. जेमिति कि आमे कहबो एठी जेमिति कि धरा जो तम घरे बा तम चिना परिचय भितरे कि गोटे लोक एक्सपर्ट करिला तार डेथ हे. तो डेथ हला परे आमे जते बेले सिटी कि जिबु त हमर गोटे कर्सी अछि जे आमे जदि आमे कांदी न पारुचंती तो ठीक अछि, बट आमे मन दुख करी सिटी छिडाउ बा कोन गोटे करू. बट जदि आमे प्रॉपर एजुकेटेड नथुवा ताले कोन हो सिटी प्रॉब्लम ना से लोकटी मरी पड़थिबो आमे हसुथुबा बा गोटे हसिबा जगह रे हसिबा कथा रे आमे बडजोर कांदिबा. तो ए जो कांसेप्ट ए जो प्रोसेस ऑफ जो शोइंग द इमोशंस, ओके, these things are marginalized by the help of education. So education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. Right moment रे केमिति आमे को हिसाब रे आमे निजु को शो करूचती, that is concept of education. Then according to Aristotle, education is the creation of sound mind within the sound body. According to Aristotle, education create a sound mind within the sound body. The sound mind रे आमे केमिति sound body रे ଗୋଟେ sound mind क्रिएट करिबा, सेही कांसेप्ट को एजुकेशन बोली कहउचନ୍ତି कि Aristotle जेतु रियलिस्टिक फिलोसोफर थी तो तांको कांसेप्ट रे सेही अनुसार तांको एजुकेशन तांको मीनिंग टाकु आमे देखिबा. Then Pestalozzi, education is natural, harmonious and progressive development of man's innate power. जोटा कि रिलेटेड टू महात्मा गांधी एजुकेशन जो डेफिनेशन देथिले सेही पाखा पाखी तमे टिके एठी रिलेट करि परिबो. एजुकेशन इज द नेचुरल, दैट इज नेचुरल टेंडेंसी and harmonious development of and progressive development of man innate power. Yes, आमे 10 वर्ष पूर्व जहा थिले आज के डेट रे सेया नाही. हम भीतर विभिन्न प्रकार चेंजेस आसी. इ जो चेंजेस आसी का पय आसी ना थ्रू ओनली बाय द हेल्प ऑफ but only but due to the education. Then according to Froebel, education is unfoldment of what is already unfolded in the jar. Okay, education is unfoldment. ए डेफिनेशन को हमें कहा सहित रिलेट करि परिबा तमरो जो विवेकानंद को सहित हम रिलेट करि परिबा. unfoldment of what is already unfolded within the jar. जेमिति कि हम गोटे छोट मंजी भितरे हमें गोटे बड़ गछर संभावना हमें देखंती. ये सुनो तो सी जो छोट मंजी भितरे जो गोटे लाइफ रो कथा अछि
ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ଗଜା ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରପର ଲାଇଟ୍, ପ୍ରପର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ, ପ୍ରପର ୱାର୍କ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗଛ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ସିମିଲାରଲି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ନିଡ୍ ପ୍ରପର କେୟାର ଫର ଦେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଜୁକେସନ ସେଇ କେୟାରଟା ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଫ୍ରବେଲ। Then according to T.P. Noon, education is the complete development of the individuality of the child. Complete development होबो आम भितर completely हम डेवलप करिवा आम निजको आम इंडिविजुअलिटी को, that is education according to T.P. Noon. According to Ross, the aim of education is the development of valuable personality and spiritual individual. Aim of education, education कोन करिवा आम भितर ना आम भितर valuable personality रो डेवलपमेंट करिवा और spiritual individuality रो डेवलपमेंट करिवा according to Ross. Then according to John Dewey, education is the process of living through a continuous reconstruction of experience. Okay, through education आम भितर कौन चेंजेस आसे ना, एज ए ह्यूमन बीइंग इन आवर लाइफ, in the life process we learn a lot of things and these are called our experiences, and education is the only way which reconstruct the experiences in a proper manner. आम भितर गोटे एक्सपीरियंस अछि, जितेबाला आम प्रॉपर एजुकेशन नेलु से एक्सपीरियंस टाको कंस्ट्रक्ट हेकी अछि ताको रिकंस्ट्रक्ट हो, किछि नुवा जिनिस जदि ऐड करिवार थिबो ऐड हो, जदि किछि मिसकनसेप्शंस बा सुपरस्टिशन से एक्सपीरियंस रे ऐड हे जाई छि आगुरु, तो जदि हम प्रॉपर एजुकेशन नेले सेगुडा सब रिमूव हो। ए भलिया हमर एजुकेशन प्रोसेस रे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस एही चले। सो दीज आर डिफरेंट डेफिनेशंस अबाउट एजुकेशन, आउ जो गुडा को विभिन्न एमिनेंट पर्सन्स माने देइछथि, आउ तमे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे मिनिमम 4-5 टा लेखा इंडियन कॉन्टेक्स्ट रो वेस्टर्न कांसेप्ट रो तमे डेफिनेशन को निहाती भाबरे मन रखि कि जीवो एग्जाम रे, सेटा तुमको हेल्प करिवो निहाती। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन रो नेचर केमिति कोन केमिति एजुकेशन कथा, एजुकेशन को जतोला बुझिबा कथा कहि जदि प्रथम रु, सो बाय द हेल्प ऑफ by learning by understanding the nature of education we can understand what is the concept of education, what is the meaning of education clearly. Okay, then come to the next one, that is education is a lifelong process. Education, that is a lifelong process. Throughout your life we gain education, or we it become a part of the process of education. Education is a continuous and lifelong process. It starts from the womb of the mother and continues the till death, that is tomb, T-O-M-B, tomb. Starts from womb and ends at tomb. It is the process of development of from the infancy to maturity. It includes the effect of everything which influence human personality. Throughout our life we changes our different behavioral patterns, we changes or we modify our personality, okay, by the help of education. So first nature of education, that is education is a lifelong process. The next point, that is education is a systematic process. It refers to the transit its activities through systematic institutions and regulation. जेमति कि मोइ एटा एग्जांपल देबी, आमे जति कि एटी वर्तमान वीडियो देखुछ तम माने ऑल आर एजुकेटेड इंडिविजुअल्स। तमे जते बेले सकाळ उठो, फर्स्ट व्हेन यू गेट अप फ्रॉम योर बेड इन मॉर्निंग, देन फर्स्ट थिंग इज जो जो प्रोसेस रे हम लाइफ बा हमें उडे कथा को नबा इठी जे हमें आगे दांत घसंती ना आगे खांती, निश्चित भाव में समस्ते आगे दांत घसंती तापर खांती, एटा उटे हमें उडे सिस्टमैटिक प्रोसेस हम लाइफ रे। तो ए जो प्रोसेस ता एजुकेटेड इंडिविजुअल ही बुझी पारती। दोज हु आर एजुकेटेड, एजुकेटेड को तम माने सेंस नबनी जे जो माने जमर पाठ पढना से मान को आगे दांत घसुनाती, समान तो खाइबा पूर्व दांत घसुन कि जमर पाठ पढा सिकिनाती, लेखा पढा सिकिनाती। They are also educated and literate. These two are different concepts. से जिनसु को हमें पर के डिस्कशन करिवा। But those who are educated, they maintain their life in a systematic way. Okay, so education learn to maintain our life, but education teach individual to maintain their life in a systematic manner. The next nature, that is education is development of individual and the society. So here through education we ensure development of both individuality and our society. It is called force for the social development which brings improvement in every aspect of the society. Sabu society sabu aspect ro kemiti development hobo
से कथा को एनश्योर करिवो कि डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इंडिविजुअलिटी. ओके, then another nature of education, that is education is the modification of behavior. जो concept टा जो definition टा हमें बहुत easily हमें पाई जाऊ कौन education, that is the meaning, but that is the modification of our behavior. Human behavior is modified and improved through educational process. Yes, आमे जेतबेले छोट पिला थिलु आमे जो बेले बिहेव करथुलु विभिन्न कथारे आमे जिद करथुलु विभिन्न कथारे छोट छोट कथारे आमे कांदी पकोथुलु विभिन्न मान जो इमोशन को आमे सो माने भलो भाबरे तो कोन मेंटेन करि परनथु ई सब जिंस जो होतला. बट जदि आमे आजिका कथा कहिबा प्रेजेंट सिनेरियो कथा कहिबा ई जो किछि वर्ष भितरे आमे जो एजुकेशन नेइछंती विभिन्न जगारू से हम कोन करिवारे हेल्प करैछि ना हम बिहेवियर को मॉडिफाई करिवारे हेल्प करैछि. नाउ in present context we are the total different persons in comparison to the our childhood. हम childhood stage रे हम जेमिति थिलु हम जदि वर्तमान हम निजु कंपेयर करिबा तो we are total a different individual. The next one, next nature, that is education is purposive. All education have their own purpose. आजिका डेट रे तमे जो माने सब B.Ed करूछो सेमानकर ई B.Ed कोर्स करिवार ताकर गोटे पर्पस अछि जे आमे टीचर टे होबो. That is their purpose. So every educational process there is their own purpose. Every individual has some goal in his life. Education contributes in attainment of that goal. से जो गोल को अचीव करिबा गोल को अटेन करिबारे तुमको हेल्प करिवो कि ना एजुकेशन. And there is a definite purpose underlying all the educational activity. और सब educational activities रे सब जेमिति कि माने तार गोटे गोल बा तार गोटे प्रॉपर पर्पस थाए. जेमिति कि हम कहू कोन जो माने B.Ed करती तांको कोर्स बा तांको प्रोसेस तांको करिकुलम रे गोटे हाइकिंग आ गोटे फील्ड ट्रिप ए भला गोटे कांसेप्ट थाए बुला बुली करिया जीवा कथाटा थाए. और दैट इज मैंडेटरी. गोटे एजुकेशन प्रोसेस रे ई जिंसरा मैंडेटरी थाए. तो जदि हमें एजुकेशन प्रोसेस रे इटा मैंडेटरी कोन पाई करिसथि ना दैट इज आल्सो हैव ए पर्पस. कोन ना जते बेले वी बिकम प्रैक्टिकल टीचर इन डिफरेंट स्कूल्स, at that time we also manage and maintain such type of activities in our school. आमे पिला को हम पिकनिक नै कि जिबा हम पिला को फील्ड ट्रिप नै कि जिबा स्टडी टूर नै कि जिबा ए सब जिंस आमे आगु को करिबा. तो सेति पई कोन करा हिच ना फ्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम जोटा आमे B.Ed रे करूछन से ट्रेनिंग प्रोग्राम रे ताकू गुटे जो आमे गुटे पार्ट करि कि रखिछथि ए भलिया विभिन्न प्रकार काम. तो ए सब जिंस को आमे कोन करि परबे ना सब काम रे सब एजुकेशन प्रोसेस रे तमे निश्चित भाबे रे डेफिनेट पर्पस पाइबो. The next point, that is education is a training. Human sense, mind, behavior, activities ए सब जिंस को कोन करबो ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करबो एंड टू क्रिएट सम स्किलफुल इंडिविजुअल्स. जते बेले आमे गुटे स्किल कथा कहउछने हम गुटे स्किल जानिबा तो सेते बेले हम ट्रेनिंग दरकार. तो ए एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग हमको किए दबो ना एजुकेशन इन ए कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली डिजायरेबल वे. आ को हिसाब रे हमको ट्रेनिंग टा मिलिबो ना कंस्ट्रक्टिव मैनर रे दबो और सोशली डिजायरेबल वे रे हमको से ट्रेनिंग दबो. द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस. इट डायरेक्ट्स द इंस्ट्रक्ट्स an individual to fulfill his desires and needs for exhalations of his whole personality. Okay, that means education provide a definite direction or instruction to leads toward our goal. हमें हम लाइफ रे जो गोल को सेट करिसंती जो एम को सेट करिसंती एजुकेशन हम कोन करिवो ना से गोल आडू को नै जिवो लीड टुवर्ड्स आवर गोल. ओके, एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल सो ताको हमर गोल को से फुलफिल करिवो डिजायर एंड नीड्स फॉर द एक्सलेशंस ऑफ हिज होल पर्सनालिटी. हमर जो पर्सनालिटी अछि ताको केमिति फुलेस्ट एक्सटेंट रे डेवलपमेंट करैबो सीटा एजुकेशन रो रोल रहइबो और नेचर रहइबो. द नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इज लाइफ. Yes, already we discussed the concept of education is life. Without education, the life is meaningless. Okay, जो माने देखिबो हम तम माने सब एते जेतु B.Ed फेड कलोनी त माने हायर स्टडीज को तमे आसिलोनी तो तम लाइफ रे तमे जतले क्लास 10th रे पाठ पढुतु क्लास 10th रे धरा जो तम क्लास रे 50 जन पिला पढुतले मने पका पाखा पाखी से हिसाब रे धरिबा हम 50 जन पिला पढुतले. किंतु आजिका डेट रे तमे 10 रु 15 इंडिविजुअल पाइबो जो माने कि तम लेवल ले पाठ पढुचंती बा पढुचंती आ बहुत पिला कोन हिचंती ना ड्रॉप आउट हे जाइचंती बा आगु पाठ पढा सब छाडी दैचंती.
तो सोसाइटी रे तमर इंपोर्टेंस जेतिकी तांकर इंपोर्टेंस सोसाइटी से शो कराय इंपोर्टेंस अछि मु मना करनै जे इंपोर्टेंस नै ऑल इंडिविजुअल आर इंपोर्टेंट फॉर द सोसाइटी बट द शोइंग नेचर ऑफ सोसाइटी जो इंपोर्टेंस रो शो करिवार जो कथा डरके देखिबो दोज हु आर मोर एजुकेटेड से मान सोसाइटी बेसी इंपोर्टेंस दिए सो विदाउट एजुकेशन लाइफ इज मीनिंगलेस and like the life is the best every aspect and incidents needs education for its sound development तारो जो गोटे प्रॉपरली आ गोटे साउंड डेवलपमेंट पई प्रॉपर एजुकेशन रो दरकार अछि हम लाइफ ठीक अछि द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एजुकेशन इज कंटीन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस जो कथा मैं ऑलरेडी तुम कहि सारथि तो आको हमें जहां भी लिखा है ड्यूइंग करो कांसेप्ट तो ताको हमें गोटे एग्जांपल देकी बुझिबा ठीक अछि तो धरा जो तमे माने विभिन्न टाइम रे तुम लाइफ रे विभिन्न एक्सपीरियंस को तुम गेन करछ ठीक अछि जेमिति कि मु कहबी तुम दुर्गा पूजा टाइम रे तुम गलो मार्केट गलो गोटे जिंस किनिया पई तो सेठी देखिलो कोन तुम जे से जो गोटे पर्टिकुलर लुगा ऊपरे गोटे ड्रेस ऊपरे सेठी लिखा हिच 1000 रुपीस ओके किंतु जते बेले से जो शॉपकीपर तुमको देला सेते बेले से केतना मार देला 900 रे देला काटी रेट को रिड्यूस करके से 900 रे तुमको प्रोवाइड करला ठीक अछि तो 900 देला तुम माइंड से तोला आसला कोन पे एठी 1000 लिखा हितला बट से हमको देला 900 व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट तापर तुम देखलो जे से जगह रे गोटे कांसेप्ट लिखा हिची डिस्काउंट तो तुम जते बापा को बात जे एल्डर तुम सहित जाइथि तुम पचाल जे काहे केटा हला ना ड्यू टू डिस्काउंट जेहेतु दुर्गा पूजा अछि तणु दुकानी कोन करूची ना से डिस्काउंट रे जिंस बिक्री करूची जोटा कि जति की तार मार्क्ड प्राइस अछि जति की प्राइस तार लिखा है से से रिड्यूस करके हमको दबो जिंस ठीक अछि तो ए कांसेप्टटा पिला आगु जानि छी जतबे क्लास 7 और 8 रे हम जतबे तांकू कमर्शियल मैथमेटिक्स को कांसेप्ट तांकू हम पढिबा कथा चिंता करू जतबे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट रो कथा आसिला से समय पिलार से जो प्रीवियस नॉलेज थिला से प्रीवियस नॉलेज को से कोन करिवो ना प्रेजेंट नॉलेज सहित कोरिलेट करिवो तो आगुरु से नॉलेज ता पाखरे कंस्ट्रक्ट ही जाइथिला आज का डेट रे से कोन करिवो ना से नॉलेज को रिकंस्ट्रक्ट करिवो जतबे हम पढू जदी से नॉलेज को से रिकंस्ट्रक्ट करिवो अगेन यूज करिवो ओके तो से कांसेप्ट को हम कोन कहू ना एजुकेशन इज द कंटीन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंस देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट ओनली educated individual can adjust in different situations so a man is a social being if he is not able to adjust himself in different aspect of life his personality cannot remain balanced जदि हम हम लाइफ को एडजस्ट न करि पारु जदि ताहले हम लाइफ हम जो निजो को निजे हम बैलेंस्ड इंडिविजुअल बोली कहि परिबा नाही कहा कहा सहित हम एडजस्ट करंती ना फैमिली फ्रेंड्स क्लास फेलोज पेरेंट्स रिलेशंस द नाइबरहुड्स टीचर्स etc so to adjust properly with different individuals we must need proper education okay that is another nature of education then come to the next point that is education is balanced development education is concerned with the development of all the faculties of a child different aspect to different concept हम पकर रहला socially emotionally physically ये जो different जिंस रहला से सब जिंस को balanced manner रे जदी हमको डेवलप करिया कथा चिंता करूछथि then we must need proper education so it perform the functions of physical mental aesthetic moral economic spiritual development of the individual so that the individual may get rid of his animal instinct जो animality character का animal instinct अछि सेतु जे बाहरी आसीबो by sublimating the same as that he become a civilized person हमें निजु को civilized individual करि परिबा through maintaining balance in our life then education is a dynamic process education is not a static but dynamic process which develops the child according to the situations and time education is not a static education is not same for all individuals it is different for different individual according to our interest according to our capability we choose the process of education okay so here education is a dynamic process it always includes the individual towards progress it reconstructs the society according to the changing needs of the time place and the of the society okay okay the next point that is
education is a bipolar process. According to Adams, education is a bipolar process जोटा कि हमें आगुरु थिला एबे टिके चेंजेस हे गलानी. तो सेठी से कोन कहउथिले, according to Adams there was two things are very important, that is teacher and student. So these are the two pole in the process of education. One person acts on another to modify the development, that is teacher. The process is not only conscious but deliberate. So here two pillars are there for the education purpose, that is teacher and the student, but that is a traditional concept. And also sometimes we consider education is a three-dimensional process. John Dewey has rightly remarked the education process by participation of the individual in the social consciousness of the race. That means एठी से कौन कहले ना एजुकेशन केवल टीचर स्टूडेंट भितर रहिला नाही. Another thing, that is society. जो कथरा से लिखिछि three poles, that is the teacher, the child and the society. Three things are important for the process of education, but in present context that concept is also जो हम कहि परिबा ए concept को मध्ये बहुत लोग डिनाई करछथि. Nowadays we consider education is a multipolar process. ये तीनटा जिंस रहिबे, and other sources and resources are also there which are influencing the process of education. So due to that we consider education is a multipolar process. That is the present thing. Okay, and the next one is education is the growth. The last point, education, the end of growth is more growth and the end of the education is more education. जोटू आमे भाबुचन जे हमर सरी गला education, no, पुणी आगु को आगु सेम जिंस रहिबो, सेम आमे एजुकेटेड होबा, आमे नुवा नुवा जिंस पढिबा जानिबा. So according to John Dewey, an individual is a changing and growing personality. The purpose of education is to facilitate the process of his or her growth. The purpose of education kono na provide appropriate facilities to the on ourselves ba jaha ko bi ame douchoti for their progress. को process रे progress हो, तार growth हो, development हो, इस जिंस properly हो. So these are all about the meaning and nature of education. So thank you all. आमे नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि नुवा टॉपिक नै के आसीबो, डिस्कशन करिवो. Stay tuned with us. Okay, goodbye.